Good morning, students. Good morning. So, in the last class, अपन डिस्कस किए थे, फिर नेटवर्क से प्रॉब्लम आ गया है ना. तो आज वही टॉपिक रिपीट कर रहा हूँ, दैट इज हिस्टैरिसीस लूप और कर्व. इट इज ऑल्सो कॉल्ड B-H ग्राफ. बराबर. तो देखो बेटा, what is the hysteresis, how we will get it. For that, here it is, take the on the x-axis, that is H value, magnetizing field, magnetizing field, and on the y-axis B or mz or I, you can that. Okay. Here स्टार्टिंग एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड ले रहा हूं या H इज इक्वल टू 0 स्टार्टिंग. द एटॉमिक डाइपोल्स आर ओरिएंट इन ए डिफरेंट डायरेक्शंस. यू नो एटॉमिक डाइपोल्स ईच हैज मैग्नीट्यूड EV/R/2. राइट. तो स्टार्टिंग डिफरेंट डायरेक्शन में से ओरिएंटेड है ये, ठीक है. तो सच दैट द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मूवमेंट विल बी 0. क्लियर. If I increase this H value, कहाँ से H आ गया? तो करंट फ्लो, करंट कैरिंग कंडक्टर ले लो, वहाँ से H प्रोड्यूस कर सकते हैं आप. बराबर ना अंशिता? हाँ. तो यहाँ मैं H वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ. लेट इट बी 10 एम्पियर पर मीटर, 20, 30 ऐसे इंक्रीज करते जाओ. देन व्हाट विल हैपन? Then these atomic dipoles are placed in the H value in magnetizing field, then it will be rotate in the direction of magnetic field. Right? Slowly rotate. Not at a time. एक ही बार rotate नहीं होता. One by one है ना. ठीक है? बराबर. At particular H value, suppose that at particular H is equal, I am taking here 100 ampere per meter. All the dipoles are aligned in the same direction. The substance get the saturation हो गया N into M. सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन. अब उससे ज़्यादा भी अप्लाई किए तो कुछ फर्क नहीं, फिर कुछ चेंज नहीं होता, उतना ही रहेगी वैल्यू. अरे अनिकेत, हाँ राइट. तो दिस इज व्हाट सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन. रिमेंबर इट इज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन. ओके, सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन. नाउ इन रिवर्स डायरेक्शन, अब ऐसे अप्लाई कर दो. इस रिवर्स डायरेक्शन में अब अप्लाई कर रहा हूँ मैं H वैल्यू. रिवर्स की मीनिंग कम करते जाओ. 90, 80 ऐसे कम करते जाओ, कम करते जाओ. ओके. बोल तो नेगेटिव H डायरेक्शन में, प्रतीक नेगेटिव H डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में कम करते जा रहा हूँ. देन यू विल ऑब्जर्व द डाइपोल्स आर रोटेटेड इन रिवर्स डायरेक्शन. बट इवन दो व्हेन H becomes 0, right, some of the atomic dipoles are again still lies in this same direction. ये डायरेक्शन में रहेगी यार. तो this remaining magnetization, when even though H is equal to 0, this remaining magnetization is called retentivity. Is called what here? Retentivity, remaining magnetization. But if you want to make this retentivity 0, then what you have to do? और अप्लाई करो नेगेटिव डायरेक्शन में, -10 एम्पियर पर मीटर से अप्लाई कर दो. Then at particular negative magnetizing field, it will be again 0. At what negative magnetizing field the remaining retentivity becomes 0, that negative magnetizing field is called coercivity. Yeah? Coercivity, remember. Retentivity means remaining magnetization. Coercivity means, retentivity means what here? MZ, remaining MZ, and coercivity means H value. Coercivity means H value. At what negative magnetizing field the retentivity becomes 0, that negative magnetizing field is called coercivity. Is called coercivity. So coercivity related to the H and retentivity related to the MZ. Clear?
राइट। अब ये मुझे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। चलो वन बाय वन। हाँ, एच वैल्यू फर्स्ट है 0, एम जेड 0, बी ऑल्सो 0, एम जेड 0 to b, p nothing, pi upon a, no flux lines are passes, there is no magnetic flux through the material। तो ऐसे मैं स्लोली इंक्रीज कर रहा हूँ एच वैल्यू, तो क्या होगा, इट विल बी इंक्रीज, नॉट इट्स फॉलो द स्ट्रेट लाइन एट पर्टिकुलर वैल्यू। यहाँ तक मैक्सिमम हुआ समझ लीजिए, दिस इज सैचुरेशन मैग्नेटाइजेशन, लेट इट बी हियर एम जेड, इट इज मैक्सिमम, मैक्सिमम सच मीन्स इसकी मीनिंग क्या है, all the dipoles are aligned in the same directions। रेवती, all the aligned in the same direction, that is what here saturation magnetization। okay, बराबर ना, right, this is the first one। अब रिवर्स डायरेक्शन में अप्लाई करें तो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है। when you decrease the magnetizing field, then what will happen, right, magnetization decreases, magnetization decreases here like this। हाँ, बराबर, even though h is equal to 0, sum of the magnetization, let it be O, A, B, OB is called retentivity, OB is called retentivity। But again you want this retentivity 0, तो और नेगेटिव डायरेक्शन माइनस एक्स डायरेक्शन अप्लाई करो, तो अगेन यू विल अप्लाई लाइक दिस, यस एट दिस पॉइंट, एट सी पॉइंट इट विल बी 0, बराबर, दिस रिटेंटिविटी एम जेड इज विल बी 0, दिस इज ओ सी इज कॉल्ड कोएर्सिविटी, ओ सी इज कॉल्ड कोएर्सिविटी। और इंक्रीज करो नेगेटिव डायरेक्शन में, फिर और क्या होगा, डाइपोल्स आर अलाइन्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन लाइक दिस, गोज ऑन इंक्रीजेस, again it will get maximum negative direction, all the dipoles are aligned in the same directions। okay, let it be d point, m z in the negative direction maximum, बराबर है ना। फिर और अप्लाई करो, और डायरेक्शन चेंज कर दो, उल्टा अप्लाई करो, राइट, यदि हाँ लाइक दिस, इट इज E, दिस इज retentivity, again but this is one cycle, magnetizing demagnetizing, magnetizing demagnetizing, समझा ना, मैग्नेटाइजिंग मीन्स डाइपोल मूवमेंट इंक्रीज होना, डीमैग्नेटाइजिंग डिक्रीज होना, रिमेंबर। So this ultimate you got here, this is nothing but hysteresis curve, where you can say here OB is equal to OE, this is nothing but what, retentivity, अरे पढ़ा ना पूरे कर, right, OC or OF, these are represent coercivity। कभी कभी क्वेश्चन पूछते सर डायमेंशन फार्मूला ऑफ रिटेंटिविटी, व्हाट इज द डायमेंशन फार्मूला ऑफ रिटेंटिविटी, और रिटेंटिविटी नथिंग बट एम जेड नथिंग बट एम्पियर पर मीटर, तो AL -1, AL -1, कोर्सिविटी सेम, कोर्सिविटी का भी सेम डायमेंशन फार्मूला, एम्पियर पर मीटर, बराबर, दैट इज नथिंग बट व्हाट, AL -1। Okay, remember the dimension formula of retentivity coercivity is same that of mz and h, AL -1 ampere per meter. Clear? Now the important point related to this curve, देखिए, so देखिए फर्स्ट पॉइंट, द एरिया ऑफ दिस कर्व, दिस एरिया अंडर दिस कर्व रिप्रेजेंट एनर्जी लॉस, कुणाल, एनर्जी लॉस, एरिया अंडर दिस कर्व रिप्रेजेंट एनर्जी लॉस पर, वेरी गुड, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस व्हाट यू आर टेकिंग, कौन सा सब्सटेंस है वो सब्सटेंस का यूनिट वॉल्यूम ले लीजिए, पर यूनिट वॉल्यूम व्हाट इज द एनर्जी लॉस इज देयर,
ये देखा, बराबर ना, दैट इज रिप्रेजेंट एरिया। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट क्या लिखना चाहिए? फर्स्ट पॉइंट एरिया, हाँ, एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस लूप, बराबर, हिस्टैरिसीस लूप रिप्रेजेंट हाँ एनर्जी लॉस ड्यूरिंग मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग। रिमेंबर बोथ आर टेकिंग प्लेस हियर, मैग्नेटाइजिंग एंड डीमैग्नेटाइजिंग। अरे अनिकेत, बराबर ना, राइट। तो एनर्जी, हाँ, रिप्रेजेंट व्हाट? एनर्जी लॉस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ specimen. There is nothing but substance unit volume. And that energy loss in SI unit, that energy loss in SI unit, in SI units I am taking here, is equal to mu naught. Experimentally calculate mu naught is nothing but 4 pi into 10 power of minus 7 joule. Barabar. In CGS units? Good. In CGS nothing but 4 pi. 1 joule is equal to 10 power of 7 hours. 1 joule equal to 10 power of 7 hours, है ना? 1 joule equal to 10 power of 7 hours. तो यहाँ अर्ज लिखना चाहिए, 4 pi in CGS units. बराबर। नेक्स्ट थर्ड वन इज, ये इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन इज इफ ए इज इक्वल टू इफ ए इक्वल टू एरिया ऑफ लूप, राइट, एन इक्वल टू, लेट इट बी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम मैग्नेटाइजिंग कितने लूप फॉर्म हो रही है, 1 2 3, दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी, बराबर ना। n is equal to what here? Frequency. V is equal to volume of substance or specimen, right? Now therefore in t time, during the t time, what is the energy loss? Energy loss is equal to formula AVNT. A area, V volume, N frequency during the T time. AVNT formula याद रखो, इस पर क्वेश्चन चांसेस, फिर एरिया विल बी गिवन, V गिवन, N विल बी गिवन, T गिवन, तो AVNT फार्मूला याद रखो, नाम भी अच्छा है AVNT, है ना, याद रखने के लिए AVNT, बराबर ना। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना है। और DF डायमेंशन फार्मूला ऑफ रिटेंटिविटी एंड कोर्सिविटी क्या है डायमेंशन फार्मूला? AL-1 और IL-1, यस यू कैन राइट। ओके, राइट डाउन, डेफिनेशन लिख दो पहला रिटेंटिविटी का और कोर्सिविटी। पहले पुट हेडिंग रिटेंटिविटी, the remaining magnetization left in the substance, even though H is equal to 0, क्या? Even though H is equal to 0 is called retentivity, बराबर ना, it is called, हाँ हो मान से it's called retentivity, है ना। नेक्स्ट कोएर्सिविटी,
The negative magnetizing field, the negative magnetizing field, the negative magnetizing field at which retentivity becomes zero, at which retentivity becomes zero, is called coercivity, is called coercivity, is called coercivity. Now लिख दीजिए, डायग्राम ड्रा कर दो और लिख दो पॉइंट्स, मेक इट फास्ट. ड्रा द डायग्राम एंड राइट डाउन. पत्ता है ना, लीफ. मस्त है, दिखने में मस्त है नहीं? अरे this area is nothing but what? Yes, energy loss. आप थोड़ा सा देख रहा है. हाँ पता है, इसलिए तो आना. लिखो रे, फटाफट लिखो, मेक इट फास्ट. कल क्लास रहेगा, फिर वो रिपीट करना. मॉर्निंग ही लेता हूँ 9 to 11 जनता ना, 4 दिन कंटिन्यू लेंगे. हो गया? गुड. कट कर देता. क्लासेस कब से स्टार्ट होते कुछ पता है क्या? नहीं होते, नहीं होते. बोलते ये इस साल नहीं छूते बिल्कुल. फिर एग्जाम तो मार्च अप्रैल में बोल रहे ना, फिर अप्रैल और मई के बीच में कंडक्ट करते करते. JEE बोर्ड एग्जाम मई में क्या? मई में बोर्ड एग्जाम है, और उसके बाद JEE जून में रहेगी. फिर JEE है क्या? नहीं है फरवरी मेरे. अप्लाई किए फिर? Right. Next, put it. Types of magnetic substances. Types of magnetic substances. इसको रोटेट कर दे थोड़ा कैमरा को. Types of magnetic substances. First one is diamagnetic. Right. एक ही बार में पढ़ा रहा हूँ तीनों भी. Second one is paramagnetic.
and third one is ferromagnetic. देखो रहे one by one. First of all, diamagnetic is the substances which are slightly repelled by the magnetic field. Sir, effect. Okay. Right. So these are the examples for diamagnetic. Single electron is to paramagnetic. Less amount of this electron reverse in opposite direction, that is ferromagnetic. Magnetic movement 0, diamagnetic. Slightly magnetic movement is there, paramagnetic. Maximum magnetic movement is there, ferromagnetic. ऑफलाइन का एटमॉस्फेयर अलग रहता है क्लास का, वहाँ भी में हो गया। चलो फिर यहाँ देखो B ग्रेटर देन H, एग्जाम्पल एल्यूमिनियम प्लैटिनम लिक्विड ऑफ, तो उधर मत देख, तू उधर सिर्फ कुछ भी होने दे आप, परेशान हो रहे।